Let us start with some zikr to seek his help. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya Mawla Meherban, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला, मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, मदद फरमा. Yari Madad to all friends online. So today we will start from the last session. We were discussing Farmans 313, 313, this book which I had shared. We'll continue the journey which we had started last week. So in last class, we were reading this Farman. Imam Sultan Muhammad Shah has made this following Farman. Let us all recite the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. हम जो फरमान तुम्हें फरमाते हैं वो जवाहिर है, जो इंसान है वो इन जवाहिर को चुन लेंगे, जो हैवान है उनकी निगाह घास पर रहेगी और जवाहिर को छोड़ देंगे. इस फरमान के हवाले से हमने कुरान की एक आयत की स्टडी की थी, तो आइए हम दोबारा इस आयत को देखते हैं. चैप्टर 15 सूरह हजर आयत नंबर 21. इस आयत का नाम है आया खजाइन. द नेम ऑफ दिस वर्स इज द वर्स ऑफ ट्रेजर. वेरी इंटरेस्टिंगली, in this farman we are reading that Mawla says that we give you treasure, jawahir, gems, when I say my farmans. And in this Quranic verse it says, and there is not a thing but its treasures are with us, but we only send down thereof in due and ascertainable measures. So यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब इमाम फरमाते हैं कि जब हम फरमान के लिए मुंह खोलते हैं तो वो जवाहिर के ढेर हमें देते हैं. जो मोमिन परख करने वाले हैं, जो मोमिन शनाख्त करने वाले हैं, वो इन जवाहिर को चुन लेंगे. लेकिन जो नादान हैं, जिनको समझ नहीं है, परख नहीं है, वो इन जवाहिर को छोड़ देंगे. और बिल्कुल यही आयत जो है इसी तरह की आयत जो कि आया खजाइन है. चूंकि ये आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा हम इसको रिव्यू कर रहे हैं कि खुदा ताला फरमाते हैं सूरह हजर आयत नंबर 21 में, और जितनी भी चीजें हैं उन सब के खजाने हमारे पास हैं और हम हर चीज को उसकी मुकर्ररा अंदाज से उतारते हैं. मौला मेहरबान ने भी यही फरमान में फरमाया है. तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो परख करने वाले हैं. जब पिछली दफा हमने बात की थी तो हमने इस बात को समझा था कि परख जो है वो पहले इल्म से आती है. जैसे कोई जौहरी हो, ज्वेलर हो, तो ज्वेलर जो है कोई बच्चा नहीं बन सकता है. बच्चा जो है वो अडल्ट बनता है, नौजवान होता है, फिर वो जौहरी की इल्म को सीखता है कि किस जौहर में क्या डायमंड है, कोई स्टोन है, तो इसकी शनाख्त की क्या तरीके हैं, वो उस इल्म को हासिल करता है, तब जाके वो जौहरी बनता है. बिल्कुल यही मिसाल हमारे लिए है.
कि अगर हमें ईमान के फरामीन में जो जवाहिर मौला हमें देते हैं उनको परखना है, तो उस परख करने के लिए जो चश्मे चाहिए, हमें जो इल्म चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए. So what we are saying that we do read this Farman of Imam, we read this verse from Quran, but the question is, do we have the ability to recognize this treasure? And I gave a very simple example of a jeweler. A child cannot become a jeweler. An adult even cannot become a jeweler. How and why? Because that adult has to go through this learning, this knowledge, how to identify what is fake, what is glass, and what is true diamond. What are different stones and what are the specific identification for each stone. Then only he can become a jeweler in this world. To become a jeweler in this world, one has to learn all the delicacies, all the in-depth knowledge about how to identify all different diamonds, their colors, their shape, and whatnot in great detail. Otherwise, he'll be in a big loss. The business of jeweler is very tough, I would say. If one becomes a jeweler and he doesn't have a knowledge, anybody can make him a fool. Why? Because he'll be given a glass saying that it's a jewel. And if he does not have knowledge, he'll believe it, he'll lose his business. Same is our example in this world. When Imam says that I give you treasures, do we have the ability to recognize that treasure? Now, friends here, I presume that most of you have been in Farman classes. And we talked about, Ibrahim Nanji Bhai and Ramzan Molu Bhai. In the Farman classes, surely one would speak and the emphasis would be to memorize the Farman. It is important to memorize. But what after the memorization? Do we truly understand? And it is expected in Farman classes that each one of the class members should speak, should at least read the Farman from their memory, recite the Farman from their memory. Is that all? What is after that? If we have these books with us now where the links are being built, how are we taking this journey further? And we all want to become that very smart, intelligent jeweler. So we can recognize what treasures are given to us. हम में से तमाम ये चाहते हैं कि हम बहुत ही परखने वाले, बहुत ही अक्लमंद जौहरी बने. क्योंकि इमाम ने फरमाया है कि इमाम की ये उम्मीद है कि हम जौहरी बने ताकि हम शनाख्त कर सकें उन फरामीन की जो इसके अंदर हैं. शनाख्त की एबिलिटी के लिए हमें इल्म को हासिल करना होगा. तो आप कहेंगे भाई हम तो फरमान सालों साल से पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है. बिल्कुल हम सालों साल से फरमान पढ़ते हैं, याद भी है हमें फरमान. आप पूछ लें 313 आपको जबानी सुना देंगे. कलाम इमाम मुबीन के फरामीन 10 रूहानी फरामीन आपको जबानी सुना देंगे. सवाल यह है कि इसके बाद क्या हमें जबानी याद करने से हम जौहरी बन गए हैं? ये तो एक स्टेज है. इसके बाद क्या? अगर हमें फरामीन के लिंक दे दिए गए हैं, इसके बाद हमने क्या किया? क्या हमने कुरान के अंदर से आयतों को ढूंढ के लिंक बनाए? आमतौर पे लोगों की ये शिकायत होती है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोविड, वी आर बोर्ड, वी हैव नथिंग टू डू. And if you ask a jeweler who is a true jeweler, he'll say, oh, I don't even have time, I'm so busy, I wish there were more hours for me to work. क्यों एक ज्वेलरी ऐसी बात करेगा कि काश मेरे पास ज्यादा वक्त होता? और कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि हम बोर हो जाते हैं. जो हकीकी शनाख्त परस्त मोमिन है वो कहेगा मुझे अब आगे बढ़ना है. मोमिन की निगाह हमेशा आगे बढ़ने की होती है. अब चूंकि फरमान का इल्म, फरमान के लिंक हमें मिल गए हैं, तो अब हमें कुरान को उठा के कुरान से लिंक बिल्ड करना है. तो आज मेरा सवाल आप लोगों से ये है, how many of you truly went back into the Quran and really read those verses? I would love to know in the chat if you really went back and read it.
Those who are in advanced classes and have a habit of reading Quran, I'm not asking you. Those who do not attend other advanced classes, tell me how many of you did read the Quran. अगर हम फरामीन को समझना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि हमें जौहरी बनना है, तो जौहरी दुनिया में भी जौहरी नहीं बन सकता है जब तक वो जौहर को पहचाने की काबिलियत को बढ़ाता नहीं है. If we really want to become a jeweler, true jeweler, we do need to work hard and study. Without knowledge, we cannot go further. So one may ask, isn't Farman enough? Am I reading Farman? So isn't that enough? I'm reading these Farmans. I would say, yes, you are. Wonderful. Good job. What is next? How many years have you been reading Farman? Tell me, have you seen any change in yourself? That would be the question. If you have changed yourself, Mubarakbad. If you have gone through the transformation, Mubarakbad. If you have seen the Noor in Baitul Khiyab, Mubarakbad. But if you are one of those who's asking these questions in classes, how do I see Noor? Then I would say humbly, let us all become jeweler to be able to identify what jewels we are being given. So I wanted to share this verse again just to realize the importance of what is being said here. हम हर चीज को उसके मुकर्ररा अंदाज से उतारते हैं. The knowledge of becoming a jeweler is not given in one go. It is not given in one sitting. It is not given in 1 year. It is given step by step. The more one works hard, the further the knowledge comes. And it truly depends on us. And we can take an example of a child going to school, let's say, senior in junior grade level. These children, all they go to school, but there are 1 or 2 who are ahead of the class. Why? They all are students. Aren't the same? But no, there are some who really work hard. So the question here is, how much are we willing to invest time and energy? If we are, wonderful. If we are not, this question is to me. I'm asking me, myself. I know I'm very lazy. I wish I would work harder. I wish I would read more. दूसरा जो फरमान है यहाँ पे, जो हमने रिव्यू किया था, तुम इंसानी सूरत में हो, खुदावंद ताला ने तुम पर बहुत ही मेहरबानी की है, तुम्हें मोहब्बत से सतपंथ दीन में जन्म दिया. लेकिन अफसोस है कि जानवर की मानिंद जन्म चला जाता है और इंसान दोबारा खाक में दाखिल हो जाता है. हमने यहाँ पे ये बात की थी कि यहाँ पे जन्म मरण की बात नहीं हो रही है, रीइंकार्नेशन की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे इंसान की रूह की हालत की बात हो रही है कि रूह की हालत जानवर की मिसाल पर है या इंसान की मिसाल पर है. और हमने बहुत डिटेल में जाके इसकी बात की थी. और जो कुरानी हवाला हमने इस यहाँ पर देखा था वो सूरह आराफ आयत नंबर 12. So we had discussed this in detail and we had studied this verse, but there's a different point today I would like to make, so we'll review it again. So this says, what prevented thee from prostrating when I commanded thee? Allah is asking Azazil that why didn't you prostrate to Adam? He said, I am better than he. Thou didst create me from fire and him from clay. आपने आदम को मिट्टी से बनाया है, मैं तो ऊंचे दर्जे का हूं, मैं तो आग से बना हुआ हूं, मैं क्यों सजदा करूं? And we all know what Azazel did. He became very proud. He thought, I am the learned, I am the scholar, I know more. How can I bow down to this poor man who is lower ranked than me? And in this context, I would like to take upon another link today, and we will go to Imam Sultan Muhammad Shah's Baitul Khiyal Farami. Remember, we are learning how to work more. Understanding of Farman, I can only speak on this Faramin and go into detail of it. But then I am not doing justice to you to make you the teacher too. And teaching starts from our own self, right?
How do we build link ourselves? तो हमने इस फरमान को, इस आयत को स्टडी किया था, लेकिन जो नाचीज की कोशिश है, बहुत ही आजिजाना कोशिश है, वो ये कि ये तो बहुत आसान हो कि एक शख्स बोले और सब सुने। मेहनत ये होगी कि हम में से तमाम लोग इस बात को समझे कि कैसे सीखना है, कैसे बोलना है, कैसे लिंक को बनाना है, क्योंकि हमें मेहनत करना सीखना है। तो हमने कुरान की आयत को लिंक किया। आज हम इमाम ही के बैतुल ख्याल के फरमान को देखते हैं, क्योंकि जब हमने इस बात को लिया कि हमें 57 दिन में पैदा किया गया है, लेकिन जानवर की मिसाल हम जन्म को गुमा देते हैं, हमारी सांसों को हम जाया कर देते हैं। और हमने मिसाल क्या ली? अजाजिल की, शैतान की। क्या शैतान ने किया था? गुरूर किया था। तो जो अजाजिल, जो कि फरिश्ता था, उसने बहुत इल्म हासिल किया था, बहुत मेहनत करके वो आला दर्जे पर पहुंचा, लेकिन आला दर्जे पर पहुंचने के बाद भी उसने गुरूर किया और वो नीचे गिर पड़ा। तो हमें ये समझना है कि हमें बहुत ही संभाल के ऊपर जब मंजिलें चढ़ना है, नीचे नहीं गिरना है। तो नीचे नहीं गिरने के लिए कैसे समझें? हम मेहनत करें, लिंक्स बनाएं, लेकिन साथ साथ हमें इसको समझना होगा कि सीढ़ियां जो ऊपर जाती हैं वो नीचे भी तो आती हैं। हम कैसे अपनी संभाल को रखें? और इमाम बहुत ही मोहब्बत और शफकत से ये फरमान फरमाते हैं, जो कि बैतुल ख्याल का है, क्योंकि हम नूर के तलाश में हैं। ये फरमान जो है कराची 27/1900 का है। और इमाम फरमाते हैं, मुखी करभारी અને ખાસ પંજે ભાઈઓને કહીએ છીએ કે તમો જલ્દી ખુદાના દીદારને પહોંચો અને આ ક્રિયાઓ ઉપર અમલ કરો, जो खोटू ना बोलવું, निंदा ना करवी। बैतुल ख्याल का फरमान। और इमाम फरमा रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना। We just studied that we have been born in this, we have been given birth in this religion with love and affection by Imam. What does it mean for us? And now we have learned in this journey that we do want to elevate ourselves, merge ourselves in Imam. And we took the example of Azazil. Azazil was an angel. And when we talk about us, we do feel this pride in our heart that we are so blessed that we are followers of living Imam. We have his Khanavadan, his blessings, Isme Azam, the supreme word from him. But then, why would Imam say that you waste your life like an animal? So we are trying to understand that part more in detail. And this is Betul Khayal Farman. Now, Betul Khayal Faramin are for us to elevate ourselves in our house of Khayal, our ibadah, where we are connecting our thoughts to Imam. We are wanting to merge with Imam. And in that Farman, in that majlis, Imam is making this Farman and saying to us, do not lie. Do not be doing gibat. So the question is, there is one part which makes us want to learn more. If we were to continue to learn and become very learned, but if we do not improve our deeds, what will be the outcome? What will be the result? And that's the point I would like to emphasize. It is one thing to learn all Faramin by heart, but continue to complain, continue to lie, continue to be not grateful, continue to be angry on others, become proud. And that is what Imam is saying here. And I just want to read this paragraph because we are building link. We are understanding how to study more, how to become strong in our studies. And Imam is saying here, and he has listed these things. खराब वस्तु ना वापरवी, कार क्रोध ना करवी, स्पर्श इंद्री वश राखवी अर्थात बदनजर ना करवी, दरेक ठिकाणे खुदाने हाजर समझવું, સંગત સારા જ્ઞાની માણસની કરવી, બીજા કોઈની ના કરવી, લોભ, લુચ્ચાઈ, ખોટી સાક્ષી, આપ હત્યા, બાળ હત્યા, ચોરી. All these
bad deeds. It's all about purification of our deeds. If our deeds are not purified, no matter how many classes we attend, no matter how many big books we pick up in our hands, highlight it and study it, if we don't work on our deeds. So one part is surely to seek knowledge, but knowledge on its own is not enough for us to become a human. जब मौला ये फरमाते हैं कि तुम इंसानी सूरत में हो, खुदावंद ताला ने तुम पर बहुत ही मेहरबानी की है कि तुम्हें मोहब्बत से सतपन दीन में जन्म दिया है, लेकिन अफसोस है कि जानवर की मानिंद जन्म चला जाता है और इंसान दोबारा खाक में दाखिल हो जाता है। इमाम की मोहब्बत से हम इस दुनिया में आए हैं। कितना दुख से इमाम ये फरमाते होंगे कि जानवर की मिसाल जन्म को हम जाया कर देते हैं। जानवर की मिसाल, कोई भी यहाँ पे जानवर तो नहीं है ना, तो फिर इमाम ऐसे फरामीन क्यों फरमा रहे हैं? चलो ये तो सारी जमात को फरामीन फरमाया, फिर बैतुल ख्याल में इमाम तमाम आमाल की पाकिज़गी के बारे में फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज हमारे पास इसमें आज़म है, आज हम इल्मी क्लासेस अटेंड करते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, फरमान भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर जो हमारे ख्यालात हैं, हमारे आमाल हैं, अगर वो नीचे जाने के हैं, जिस तरह से हमने मिसाल दी अज़ाज़िल की। अज़ाज़िल कितनी किताबें पढ़ा लिखा था? पीर फरमाते हैं कि 36 करोड़ किताबा पढ़िया, 36 करोड़, 36 मिलियन बुक्स। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमें इल्म हासिल करना है, इल्म सिर्फ अकेला हमारी मदद नहीं कर सकता है। जरूरी इसलिए इल्म की बात की जाती है कि हम इल्म से दूर हैं, तो हमारे अंदर ये आदत, ये समझ होनी चाहिए कि हम इल्म से करीब आए। जब हम इल्मी क्लासेस में आते हैं, इल्म को हासिल करते हैं, 1 घंटा बहुत अच्छा मजा आता है, बहुत खुशी। इसके बाद फिर अगर हम हैवान की हालत पे आ जाते हैं, तो जो कमाई हमने की थी वो फौरन से चोरी हो जाती है। तो यहाँ पे जो बात आज जोर देना नाचीज चाह रही है वो ये कि हमें समझना होगा कि हम इल्म को अपने ऊपर अमल में ला रहे हैं कि नहीं। सिर्फ जबानी इल्म को सीख रहे हैं कि किस तरह से फरमान याद कर लिए हैं, किस तरह से फरमान के लिंक बना लिए हैं, किस तरह से हमने कुरान भी पढ़ना सीख लिया है, किस तरह से हम जो है वो इल्मी क्लासेस में ही हम तो गुजारा करते हैं। हम सुबह शाम जमात खाने जाते हैं, कभी जमात खाना मिस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात में तो दूसरों के लिए सिर्फ जजमेंट ही है। हम गीबत ही करते हैं, बुराई ही करते हैं, झूठ बोलते हैं, या हम हर वक्त कंप्लेन कर रहे हैं, हर चीज में नाशुक्री कर रहे हैं, या हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। लोगों को हम फ्री विल नहीं दे पाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। ये तमाम बातें हमें आगे बढ़ने से रोकेंगी, चाहे हम सारा दिन इल्म पढ़ते रहें और अमल में अपने आप को बेहतर ना करें। तो ये जरूरी नुक्ता था जो आज नाचीज चाहती थी कि हम इस बात को समझें कि हम क्यों ये मिसाल हमने अज़ाज़िल की ली इस फरमान के हवाले से, कि हम समझे कि इमाम फरमाते हैं कि तुम्हें मोहब्बत से सतपन दीन में जन्म दिया है, मोहब्बत से। अफसोस कि जानवर की माने जन्म चला जाता है। इमाम को कितना दुख हुआ होगा ये फरमान फरमाते हुए। फिर मौला फरमाते हैं, रोजे कियामत में दूसरे लोगों के लिए तो एक बहाना भी है, इन्हें सतपन दीन, हकीकी दीन की खबर नहीं थी, लेकिन तुम अरब, बदख्शानी, खोजा, मोमना और दूसरे जितने भी इस्माइली सतपंथी हैं, उनका कोई भी बहाना क़यामत के दिन नहीं चलेगा। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो लोग इल्म की क्लासेस में आते हैं, और एक सवाल जो बार बार होता है वो ये, हमारी तो इतनी उम्रें हो गई हैं, हमने तो कभी कुरान को उठाया नहीं, कुरान का इल्म हासिल नहीं किया, तो अब हम कैसे लर्न कर सकते हैं? हम तो सिर्फ फरमान को जानते हैं, गिनान को जानते हैं। और हमें ये सुनने में आता है कि भाई जो जमात चाइना में, रशिया में, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, वो तमाम जो बल्तिस्तान जमात है, वो जमात जो है वो इस्माइली कुरान की तालीमात पर बने, वो इस्माइली कुरान की तालीमात पर बने।
اور ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے ہم سے، کیونکہ قرآن میں جس طرح سے امامت کو ثابت کیا گیا ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم اس زمانے میں رہتے ہیں اور ہم مسلمان اسماعیلی ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے تاکہ ہمارے اندر یہ خود اعتمادی آئے، یہ یقین آئے، یہ سمجھ آئے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں۔ Through this Farman, the point I'm trying to make here is, why would Imam say Ara, Badakshani, and then Khoja and Momna? So Khoja and Momna, we are the ones, we grew up with Ginan and Faramin Talimat. We never learned Quran. And very many classes are here. Our friends would say, oh, we never learned Quran. We do not know Quran. How at this age we are going to pick up Quran and you are teaching us to make links? How do we do that now? We cannot. We are too old. And you are never too old. Imam says that. But very interestingly, in this Farman, Imam says that on the day of the judgment, you will not have any excuse. You will have not any excuse. And those who will not have excuse are Arab, Badakshani, Khoja, and Momna. So I want to emphasize that here, Imam has mentioned Indo-Pak Jamaat as well as all those Jamaat who believed in Imam through Quranic Talimat. We all are in one category. Why? We do not know what will happen on the day of judgment. We have not understand that. What is the day of judgment? What does it mean to have this day of judgment? And on that day, no excuse will be accepted. Either you have studied Quran, or you have studied Faramin, or you have studied it all. Your excuse will not be accepted. How do I understand this Farman? The first point I would like to emphasize is understanding the importance of ilm with amal, knowledge with purification of the deeds. And purification of the deeds is very, very broad. Somehow we have limited the purification of deeds to attendance of Jamaat Khana, reading Faramin, attending all majalis. But in reality, it's a very incomplete understanding of purification of deeds. We feel very good, we go to Jamaat Khana morning and evening. We say it proudly too. We are lacking knowledge in here. जब हम इमाम के फरामीन को पढ़ते हैं और इमाम कहते हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तो सवाल पैदा होता है कि मौला क्या बात कर रहे हैं? रोजे क़यामत में हमारा इम्तिहान होगा, हमारे आमाल पढ़ के सुनाए जाएंगे, तो ये क्या मतलब है इस बात का? क्या हमें अपनी मौत का इंतजार करके अपनी रोजे क़यामत का इंतजार करना है? इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे उन तमाम मोमिनों की बात हो रही है जो कुरान पढ़ते हैं, जो गिरान पढ़ते हैं, फरामीन पढ़ते हैं, तमाम की बात हो रही है। तो क्या मतलब है यहाँ पर? हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम इल्मी क्लासेस में इल्म की बात करते हैं तो वो एक बात है, इल्म अमल के बगैर नामुकम्मल है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का ही एक और फरमान कि आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो फायदा क्या होगा? यानी कि जो फरामीन में जिन नुकात पर इमाम एम्फसाइज कर रहे हैं, अगर हम उसको अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे तो हम इस बात को कैसे समझेंगे? इमाम फरमाते कोई बहाना तुम्हारा चलने वाला नहीं है वहां पर। तो यहाँ पे एक और खूबसूरत आयत हम देखते हैं जो कि सूरह नमल 27/66 है, जिसमें खुदा तआला फरमाते हैं, Nay, their knowledge respecting the hereafter is slight and hasty. Nay, they are in doubt about it. They are quite blind to it. बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हैं। 3 बातें फरमाई गई हैं। तो जब इमाम फरमाते हैं कि रोजे क़यामत में तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा, तो हमें गौर करना पड़ेगा कि रोजे क़यामत का मतलब क्या है। और कुरान में ये बहुत ही खूबसूरत आयत कि आखिरत के बारे में इनका इल्म खत्म हो चुका है। आखिरत है क्या? क़यामत है क्या? बल्कि ये इसकी तरफ से शक में है, यकीन नहीं है कि क़यामत आने वाली है।
बल्कि इससे ये अंधे बने हुए। बहुत ही गौर तलब ये आयत है। हमारा कोई भी बहाना क़यामत के दिन नहीं चलेगा। जब हम पीर नासिर खुसरो की किताबें पढ़ते हैं क़यामत के हवाले से, इस फरमान को समझने के लिए, इस फरमान को समझने के लिए जब हम पीर नासिर खुसरो की किताबें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि क़यामत तो एक दिन नहीं है, क़यामत तो मुसलसल है, हमेशा चल रही है क़यामत। तो ये किस आखिरत की बात हो रही है? हम तो समझते थे आखिरत का जो वक्त आएगा हमारे मरने के बाद आएगा। तो ये क्या बात हो रही है मौला? इल्म से हमें इसमें गोता लगाना होगा ताकि हम अमूलक मोती को जो है वो चुन के बाहर ले आए। जब इमाम फरमाते हैं कि रोजे क़यामत में किसी अरब, बदख्शानी, खोजा, मोमना, जो भी इस्माइली सतपंथी है, किसी का बहाना नहीं चलेगा। और अगर पीर नासिर खुसरो ये फरमाते हैं कि क़यामत तो जारी व सारी है, तो आज कौन सी क़यामत हो रही है? किस क़यामत की बात कर रहे हैं? और अगर मुझसे सवाल होने वाला है तो क्या मैं तैयार हूं? फिर ये कुरान की अजीब व गरीब आयत, आखिरत के बारे में इनका इल्म खत्म हो चुका है। क्या हम तो वो नहीं है कि हमारा इल्म खत्म हो चुका है? अगर हम आखिरत को समझ रहे हैं कि मरने के बाद आएगी और हम दुआ करेंगे मौला इस रूहानी को असल में वासिल कर, तो फिर जो हमने इल्म की स्टडी की और फिर नासिर खुसरो फरमाते हैं कि भाई क़यामत तो जारी व सारी है, तो जिंदगी में कौन सी क़यामत आ रही है? वो कौन सा इल्म है जिससे हम अंधे बने हुए हैं? वो कौन सी चीज है जिससे हम शक में हैं? क्या हमने कभी सवाल किए हैं? इस इल्म को जानने पहचानने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं उस पर अमल किया है? और अमल में हमारे आमाल भी हैं। तो ये बहुत ही गहराई के साथ समझने की जरूरत है। So in this Farman, when Imam says that on the day of the judgment, no excuses will be accepted from anybody, regardless of what kind of ilm you study Quran, you study Jinan, you study Farman, or you study all three, because you're interested in knowledge, and that's wonderful. But is that enough? Because Mawla says to everybody, your excuses will not be acceptable. So what are those excuses? We need to find that out. And then when we are studying this word, that on the day of judgment, we say it in our dua too, day of judgment. And again, because we are seekers of true knowledge, so we study book of Pir Nasir Khusro too, Wajh-e-Din, in which Pir says that Qiyamah is continuous. It is happening constantly. So the question would be, what Qiyamah is happening today, right now? We all assumed that it will happen when we are dead. And Jamaat will pray for us, Mawla Asal mein Wasal. Merge this moment into you, Mawla. Give him your Ruhani Didar, Nurani Didar. But then what happened to the Qiyamah during the lifetime? Because Quran says it, that the knowledge of Qiyamah, Akhirat, they've forgotten about it. And if they've heard about it, they're in doubts about it. And they've become blind to it. So it sounds like that there are three categories of people. Question would be, which category do we belong to? Have we taken all those sacrifices, all that hard work which we need to do to find out in the journey of true knowledge, to understand each word Imam is saying? Remember, Imam has said that each Farman, one sentence of Imam has 1,000 meanings. So I'm hoping that I'm giving you new dimension of this Farman, new understanding of this Farman. And how am I able to do that? Because I'm relating it to Quran too. I'm trying to relate it to Pir Nasir Khusro. So we can broaden our thinking, broaden our focus, and realize what is Imam saying here in one sentence. In order to understand Imam's one sentence, we really need to study so many different books. And that's how Momin stays busy in their life. They never have time to get bored. So when we are linking this Farman to this Quranic verse, it is so interesting to read that there are three categories of people.
that there is one group who says, who are those who have lost this knowledge. They don't even have this knowledge. And remember, we are not talking about others. When we read Farman, when we read Quran, the first person you apply it is myself. Charity begins from home. First, I need to take care of this soul so this soul can help others. I am responsible for my soul. Because Mawla said that he has given me this birth in Ismaili Tariqa with love and affection. So nobody else is responsible for each one of us. We ourselves are responsible. Exactly the way in the worldly life, if we are hungry, we have to extend our hand out, get the food and eat it. In this physical world, in Kalam Mawla Ali says that kasrini is needed by each one of us. The word kasrini means riyazat, meaning taking efforts, giving those sacrifices which are needed to understand and elevate ourselves. And then comes the Baitul Khayal. And remember that Baitul Khayal Farman we just studied. When we meet all those conditions of purification of our deeds, then we can say, Mawla, I am humbly working on purifying my deeds. I'm learning the true knowledge. Very humbly, I'm sitting in ibadat. And then Imam says, do not think that the way you reach out to pick up the glass to drink water, you will get into spirituality. Even at that level, there are tests. Test of what? Being humble. It is not I who is studying. It is not I who is speaking. It is not I who is sitting in ibadat. It is only and only His mercy. Ya Mawla, it is all due to you. Shukr alhamdulillah. I am nothing. It is all you, Mawla, who is helping me to do these things. And humbly now, I have reached to your darbar. Mawla, bless me with your didar. And then Imam says, patience. The way in your physical world you are able to extend your hand and reach to this glass and drink water, you cannot do that in ibadat. Meaning what Imam is teaching us from the day one when we start the Baitul Khayal, we get the Isme Azam. Imam is teaching us, be humble. Be at the place of the shoes of the Mu'minins. Keep yourself down to earth. Never say, I do this, I did this. Because who did I? Azazel. Humility is the pillar to progress in Baitul Khayal. Coming back to this Farman, when we seek knowledge, we will have to take each word of Imam's Farman and see how many understanding do we have. जब हम इमाम के फरामीन को पढ़ते हैं तो हर लफ्ज के हमें देखना होगा कि कितने माना हमें पता है और कैसे पता चलेगा. क्या सिर्फ हम इल्मी क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, कोई बोलता रहे हम सुनते रहें और यही हमारी मेहनत है, हमने सुना? तो जो सुनना है वो कान एक सेंस हुआ. खुदा ने हमें जो 5 सेंसेस दिए हैं इसकी कोई वजह है. हमें अपने हाथों से मेहनत से लिखना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है. When we will integrate all our 5 senses into learning, then we'll be able to see a change in our beings. If we continue to just listen and somebody is talking and we are listening and Allah, Allah khair sallah, humbly, very humbly I say, lazy approach. And we as a Jamaat, we are very lazy. We do know that. We have not worked hard as Imam has been wanting us to do. And here I would refer to you Imam Sultan Muhammad Shah's Platinum Jubilees Bayan. And if friends have it, they can post it on the chat. And Imam very clearly says, with disappointment, the spiritual progress Imam wanted to see in the Jamaat, he doesn't see it. Imam ने सुल्तान मोहम्मद शाह हमारे प्यारे इमाम 48 जौमे के इमाम मौला फरमाते हैं अपनी प्लेटिनम जुबली में कि जो रूहानी तरक्की हमें जमात में देखनी थी वो हम नहीं देख पा रहे. और हमने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की कितनी ही तारीफें सुनी है कि वो इमाम बड़े अजीब व गरीब इमाम थे. जिस तरह से इमाम ने इसमें आजम जमात को दिया वो बहुत ही अजीब व गरीब था.
इमाम ने जितनी मोहब्बत और शफकत से जमात को ऊपर लाया दीन और दुनिया में, वो बड़ा अजीब व गरीब है। कोई इमाम ऐसा नहीं है। जब हम हिस्ट्री में मुताला करते हैं, तारीख को देखते हैं, तो सुल्तान मोहम्मद जैसा काम किसी ने किया नहीं है। फिर इमाम ने ये फरमाया कि जो रूहानी तरक्की हमें देखनी थी वो हमें नजर नहीं आ रही है। क्यों इमाम ऐसा फरमाएंगे? क्या हम हार्ड वर्किंग मोमिनीन नहीं है? दुनिया में क्या हम मेहनत नहीं करते हैं? अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे पास ये तमाम चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये इमाम की एक्सपेक्टेशंस है। तो अगेन ये तमाम बातें मैं अपने लिए कर रही हूँ। मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं किसी भाई या बहन से ये कह सकूं। ये तमाम बातें जो है मैं अपने ही रूह को झंझोड़ने के लिए, अपने ही गिरेबान में झांकने के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, क्योंकि मैं सुस्त हूं। फिर हम दूसरा फरमान लेते हैं इमाम का। मौला फरमाते हैं, तुम्हारी अब जो बकिया जिंदगी है, कब तक बेफायदा और बेखबरी से गंवाते रहोगे? Beautiful Farman, Mawla says, the remaining life you have, how long you are going to waste it? How long you are going to waste it? Unaware, being unaware, what is the benefit of our religion, our tariqah? We don't even realize how blessed we are that we have living Imam with us. You know, let me get back to here. Imam Sultan Ashah in his Farman says, दरेक ठिकाने खुदा ने हाजिर समझो. And if you continue to read this, Imam says somewhere that Imam is always present with us. We are so blessed to have living Imam. What does it mean to be having living Imam? Do we know that? Do we realize it? What does it mean? Yes, Imam is there. So, okay, Imam will give us Isma Azam. He has given it to us. Then, what does it mean? And Imam is asking us, how long the life which you've remained with, how long you're going to waste it in unawareness, in lack of knowledge, lack of understanding? Again, this question is for me to ask myself, how long I'm going to waste my time, how long I'm going to stay lazy, how long I will say I'm busy with my worldly life, I don't have time to do this which I need to do. Let me take care of children, let me take care of my work. Everything else is important than my own soul. Why? Oh, I go to Jamaat Khana morning and evening. I sit in Bandagi, but my thoughts are never focused. So this question is to me, myself. Then Mawla says, तुम्हारे आदम के वजूद को पहचानो, इंसानी वजूद का तुम्हारा मर्तबा समझो. Recognize yourself as Adam. Please forgive me because I'm paraphrasing. I don't have the English Farman version with me. And the Farman translated, they are not very well translated, so I don't like to study that. I can read Urdu and I can paraphrase very humbly for you. तुम्हारे आदम के वजूद को पहचानो. Recognize your own self. Why? Because we are children of Adam. Recognize yourself. Recognize your status as human. Recognize your status as human. Why would Mawla say that? Because he sees us behaving like an animal. And we are not animals. We have to recognize our status as humans. Human is the best creation of Allah. इमाम जब फरमाते हैं कि तुम अपने इंसानी वजूद का तुम्हारा मर्तबा समझो, तो यहाँ पे इमाम क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इमाम हमें देखते हैं कि जब हमें इमाम देखते हैं तो हमारी हालत तो जानवर की मिसाल पर है. तो इमाम फरमाते हैं कि तुम अपने इंसानी मर्तबे को पहचानो, इंसानी वजूद को पहचानो. हम बनी आदम हैं, आदम के चिल्ड्रन हैं. माफी. हमारा जो वजूद है वो बहुत ही आला है. क्यों?
खुदा ने फरमाया कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, बेहतरीन क्रिएशन, सबसे बेहतरीन। ये इंसान ही की ताकत है कि वो अपनी सुस्ती से अपने आप को जानवर की तरह रखे या अपनी मेहनत से अपने आप को फरिश्ता बना ले। और इमाम ने फरमाया फरिश्ते पे ही क्यों रुकोगे, तुम आगे जाओ, फिर पैगंबर बनो। कोई लिमिटेशन नहीं है इंसान के लिए। ये है इंसान का मर्तबा। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं तब तक हम अपने मर्तबात को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि इंसान का मतलब क्या है, इंसान के पास क्या ताकतें हैं, वो खजाइन क्या है जो एक इंसान हासिल कर सकता है। कौन सा इंसान? जो इमाम का फॉलोवर है। हमने अब तक खजाना सिर्फ इस्म आजम को समझा है। बेशक इस्म आजम जैसा खजाना कोई भी नहीं है, लेकिन इस्म आजम जो है ना वो खजानतुल खजाइन है, यानी खजानों का खजाना है। उन तमाम खजानों को समझने के लिए जो इल्मी मेहनत, जो जिस्मानी रियाजत हमें करनी है, अगर हम नहीं करेंगे आमाल की पाबंदी के साथ, तो उस खजाने को जब हमें जिंदा करना है हम नहीं कर पाएंगे। कुरान की एक और आयत देखते हैं यहाँ पे, चैप्टर 57 वर्स 13, सूरह हदीद आयत नंबर 13। On the day when the hypocritical men and the hypocritical women will say to those who believe, wait for us that we may have light from your light. It shall be said, turn back and seek a light. Then separation would be brought about between them with a wall having a door in it. The inside of it there shall be mercy, and outside there shall be punishment. उस दिन मुनाफिक मर्द व औरत ईमान वालों से कहेंगे कि हमारा इंतजार तो करो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर ले। जवाब दिया जाएगा, तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर उनके और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाजा भी होगा। उसके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत और बाहर की तरफ अजाब होगा। बड़ी अजीब व गरीब आयत। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं मुनाफिक मर्द व मुनाफिक औरत, कौन है वो लोग? दूसरों की बात नहीं हो रही है। मुनाफिक उनको कहा जाता है कि जो जबान से कुछ बोलते हैं और करते कुछ है। क्या मतलब हुआ इसका? अमाल की पाकिज़गी नहीं। जबान से कुछ बोलते हैं, जिस्म से कुछ और करते हैं, सोचे में कुछ और है, वो झूठ बोल रहे हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने बैतुल ख्याल के फरमान में क्या फरमाया? खोटू ना बोलो। यही तो झूठ बोलना है कि जो हम कहते हैं वो करते नहीं है। तो इमाम का ये फरमाना बैतुल ख्याल में कितनी अजीब व गरीब बात है कि अब ये तमाम लोग, क्योंकि बातनी आंखें कान खुले हैं, अब ये देख सकते हैं और कहेंगे कि जो आपके पास नूर है थोड़ा सा हमें दे सकते हो प्लीज, हमें भी दे दो ना, हम भी तो तुम्हारे साथ थे दुनिया में। क्या कहेंगे? नहीं, लौट जाओ जहां से नूर तुमने छोड़ा था। तो क्या ये मरने के बाद ही बात हो रही है कि हमारी जिंदगी में हम सुधारा कर सकते हैं? जिंदगी के दरमियान बात हो रही है। बहुत ज्यादा गुंजाइश है इसमें समझने के लिए। आज ही अगर हम इस बात को समझ लेते हैं और जाग जाते हैं और ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो हम कहेंगे कि आज ही तो ये बात कही जा रही है हमें कि पीछे लौट जाओ। कहाँ? जहां से तुमने मेहनत को छोड़ा है। कौन सी मेहनत? इल्म और अमल की। अपने अमाल को पाकीज़ा करना है, इल्म हासिल करना है। क्या होगा? हमें भी नूर से रोशनी मिल जाएगी। क्यों? कि जो लोग ईमान के साथ हैं हकीकी तौर पर, वो वाले मोमिन नहीं जिनका बहाना नहीं चलने वाला है। ये वो मोमिनीन है जो हकीकी तौर पर इमाम के साथ हैं, समझते हैं कि इमाम अगर हमारे साथ आज जिंदा जावेद इमाम हमारे साथ है तो इसका क्या मतलब है? ये रहमत है तो क्या रहमत है, इसमें आजम है तो क्या बात है। इन तमाम चीजों की जब गहरी नॉलेज होगी तो हम समझेंगे कि किस तरह से हम ईमान की रहमत में ईमान के साथ है। शुक्रिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नाचीज यहाँ पर इख्तिताम करेगी। अगर कोई सवाल है तो जरूर दोस्त आगे आए। Lovely session, my dear. Lovely, very nicely said.
very nicely explained. Shukran, Mawlana. I see a question here. What Farman book are you reading from? I was reading 313, 313 Faramin. Kamra Sahib can share it with you if you don't have that one. And Salim is again asking me which Adam you are mentioning here. So Adam is a title. Adam is a title. This title can be given to very many. In every cycle, the first beginning of the cycle, the first man in that cycle is given the title of Adam. Again, this is an advanced concept. So I would urge you, if you are interested to continue to learn, I would recommend you to go to the site www.monoreality.org, www.ismaililiterature.org or .com. You will get very many books to study and to broaden your thinking about it. So thank you for asking that beautiful question. All right, I see another question. After death, do you think we will have the same emotions in the spiritual world as we have in the physical world? Are there any bad deeds like greed, gossiping, lying, betraying, nafarmani also exist in the spiritual world? You know, Salma, you've asked a beautiful question. It is impossible to have all these carnal, soul, instinctual behavior in the spiritual world. So what are we talking about? This world. All this is here while we are living. So you actually understood a very crucial point. And if you keep that in your mind and study these Quranic verses and Farman, I am telling you, Mawla will open the doors of understanding for you. So the death which is mentioned, it's the death of Mutu Kabla Anta Mutu. When a Mu'min Salih goes through that death, while living, he or she is able to see things differently while living. And then there are others, while living, are still struggling with carnal, soul, instinctual behavior. So I see another question. Die before you die happen in every step, or is it referring to climbing step by step? Both are true actually. So it does happen step by step, one step at a time, and then you do climb step by step. So it's same in a way. So I hope I have answered your question, Karima. And then I see Dr. Jusa is saying, will there be knowledge and guidance for those souls who have not reached their asal in this world? Yes, we all have to have the knowledge, regardless, this world or that world. Without the recognition of Imam, without this knowledge, there is no mukti. Mukti in the sense to be one with the Imam, to merge with the Imam. So we do need to seek this knowledge in this world. So we are happy when we are with Imam. Alhamdulillah. And I see, so let me just read that because a beautiful point. And thank you, Ali, for sharing. So Allama Nasiruddin Hunzari says in his book, Ya Ali Madad, explaining the wisdom-filled verse. This verse is so beautiful. And I read here, I quote, this wisdom-filled verse has many aspects from which appear the glimpses of many four wisdoms. One of them is that one should go back through the path of history and recognize the true successor of the Prophet. This means that the light in whose illumination the moments will traverse the distance of the path of the hereafter or the spiritual path will be the same light which used to be among them in this world. Therefore, the hypocrites will be told that if you want to walk like them in the illumination of the light, go back to the world and recognize it there. Another significant point in it is, do not the hypocrites at this place cry for guidance, support, and help? Recall ourselves. In how many ilmi classes have we heard this question? What do we do because we did not know? We did not know. Did we really not know? I'm asking myself. And do they not receive this reply that today you will not receive any help from the light because you did not attain help from it?
in the life of the world. Allah Madad Farma. What a beautiful quote. Thank you, Ali, as usual. So I think this is very heavy point. I would like to stop here, and we need to reflect a lot on this, because if we don't reflect, we'll not do justice to what we have talked about today. And tomorrow, inshallah, I'm going to speak about hope. We all have hope, and tomorrow we'll talk about it from a very different aspect. So I'll see you tomorrow. Thank you, friends, for joining on this Saturday morning. Yali Madad, Yali Madad. Yali, see you tomorrow. Bye. Yali Madad, and thank you. Yali Madad. Shukr Mola. This conference will now be recorded.